So, dear friends, in the yesterday class, we were discussing about liver qi stagnation. हम लिवर ची स्टैग्नेशन की बात कर रहे थे. So we'll continue the topic. And we'll try to understand liver chi stagnation in the more deeper way. अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे. Liver chi stagnation is a very big topic, right? So when we are talking about the liver chi stagnation, before that, let's go quickly and talk about only chi stagnation. Then we'll talk the liver chi stagnation. तो हम पहले chi stagnation की बात कर रहे हैं. When chi is not moving properly, whether it is stopping or slowing down, दोनों बातें हो सकती है. या तो स्लो हो गई है या स्टॉप हो गई है. That is called stagnation. Like we have given the example of traffic jam. So when the chi is flowing in the human body smoothly, we are telling healthy body. And when chi is not flowing properly, blocked chi or the stuck chi, we are telling disease. तो ची का ठीक से फ्लो होना हेल्थ है, और ची का रुक जाना, अटक जाना ही बीमारी है. So there are many causes of the chi stagnation. One is emotion, like anger, frustration, stress, because emotions also are energy. Emotion भी एक ऊर्जा है, which can cause chi stagnation. Emotion can change our mood immediately. इमोशन हमारे मूड को बदलने की ताकत रखते हैं तुरंत. एकदम से आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए, आप खुश हो जाएं, आपके इमोशन बदल जाएंगे. इमोशन कैन चेंज योर एनर्जी. So first cause of the chi stagnation are emotions. Second, lifestyle. We already know what is the lifestyle today we are following, people are following. So when there is a problem with the lifestyle, like no exercise, we are just coming out from the home till the office, we are just going with the bike, with the car, with the vehicle, we are not walking, and irregular food habits. So lifestyle is not very good. And also injury, accident. So there might be certain cause of the chi stagnation. कई सारे कारण हो सकते हैं chi stagnation के. फिर हमने बात की थी कि जो chi stagnation होता है उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, the core symptom we can tell. So we'll able to find out, because right now I'm telling about the chi stagnation, because we also there are small intestine chi stagnation also. So whenever any type of the chi stagnation, it will create feeling of distension. जैसे गुब्बारे को फुलाया और फुलाते गए और फुलाते गए, अब एक वो सी लिमिट आ जाएगी कि अब लगेगा गुब्बारा फट सकता है. So the feeling of distension is the sign of any type of chi stagnation, whether the liver chi stagnation or the small intestine chi stagnation.
लाइक पेन इन द एब्डोमेन, ऐसा लगेगा पेट फटा जा रहा है. लाइक डिस्टेंशन इन द एब्डोमेन, डिस्टेंशन इन द चेस्ट, distension in around the uterus or in the lower abdomen, like feeling like fullness. This is the first sign of any type of chi stagnation. Second, moving pain. Because we are talking about chi, we are talking about energy. Energy can move. So the second sign, moving pain. Sometimes pain might be below the rib, sometimes pain might be in the chest, sometimes pain might be in the head or headache. So the moving pain, right? Also the sign of chi stagnation. Now, chi stagnation, another sign, it will create tightness. For example, आप जिम गए और चलो जिम का उदाहरण छोड़ो, टेक अ सिंपल एग्जांपल. One female has wear tight jeans and tight t-shirt. एक फीमेल ने टाइट कपड़े पहने. And after that, suddenly she got some news and she became very stressful and got chi stagnation, because chi stagnation is like energy. उसने कोई घटना घटी और उसका chi stagnation हो गया. अब वो अपने कपड़े नहीं चेंज कर पाए. She were not able to remove the clothes. The clothes become very very tight. This is a real example I'm telling you. कि कपड़े पहन तो लिए, अब कपड़े निकल ही नहीं रहे हैं. Because as the chi is stagnant, some part of the body got distended and cloth become very very tight. So people might feel distension in the abdomen, distension in the body, distension in the head, distension in the chest. Female might feel distension in the breast. These all are the signs. And tightness. Tightness in the breast, tightness in the chest, tightness in the thigh, tightness in the body part. So tightness, although the sign of chi stagnation, that's why when you prick the needle now, needle also might be painful. Person will shout. अगर किसी व्यक्ति का ची स्टैग्नेशन है, उसकी बॉडी टाइट है, निडल उसे तुलनात्मक रूप से ज्यादा दर्द करेगी. द कंपेरेटिवली निडल विल बी मोर पेनफुल rather than the person who is very relaxed, who is calm and not having chi stagnation. दूसरा व्यक्ति जो एकदम रिलैक्स है, काम है, उसकी बॉडी रिलैक्स होगी, उसकी मसल रिलैक्स होंगी. So due to the relaxed muscle, the needle not might be that much painful. The same patient you will see, someday the patient will shout a lot, and another day the same patient will accept your needle very quietly, calmly. It depends on the emotional level or the chi stagnation. So number one, I told about the distension. Number two, moving pain. Number three, tightness. And changes in the mood changes or moody. When the person is having chi stagnation, person become moody. Suddenly will become joyful. Suddenly will become sad. Suddenly want to do something. Suddenly doesn't want to do anything. Moody. वैसे देखा जाए जितने साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी मूडी होते हैं. जितने भी डीप रिसर्चर होते हैं, वो भी मूडी होते हैं. मूडी लोगों को दुनिया अच्छा नहीं मानती, लेकिन मूडी बहुत सारे जो बहुत डीप थिंकर होते हैं, दे आर मूडी. बट मूड चेंजेस इज द साइन ऑफ ची स्टैग्नेशन. यार अभी तो बड़े बड़े खुश थे तुम, कोई फोन आ गया, पूरा मामला 180 डिग्री से टर्न हो गया. एंड द ची स्टैग्नेशन सिम्टम्स कम्स एंड गो.
Symptoms are coming and going. Okay, you are also feeling moody right now. Very good. I am also moody. Okay. The many person I might be moody. When we like, we can do anything. When we doesn't like, we do nothing. That is called moody. ओके इसीलिए हमने क्या पहले मूडी होने को भी अच्छा प्रूव कर दिया, क्योंकि अपने को गलत साबित करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना. सो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट, फर्स्ट वी विल प्रूव दिस इज रॉन्ग थिंग, then we are telling the wrong thing is not the bad thing. Okay, but that is chi stagnation. Okay, fine. So now we are, this was the sign of chi stagnation of any type of the chi stagnation. What is the sign? Distension, फटने जैसी फीलिंग होना, मूविंग पेन, टाइटनेस, मूड चेंजेस, symptoms comes go, appear, disappear. This might happen with all type of the chi stagnation. Now we are coming to the liver chi stagnation. अब हम liver chi stagnation पर आ जाते हैं. When liver energy failed to move smoothly, liver chi is not flowing smoothly, that is called liver chi stagnation. हम 2 दिन से ये सुन रहे हैं, है ना, तो अब पता है. अब तो आप बोल रहे होगे आगे बढ़ो बस, बहुत बोला. यस, आगे बढ़ रहा हूं. The most common sign of the liver chi stagnation start from hypochondrium, distension in the hypochondrium below the ribs, tightness in the chest, feeling of lump in the throat, mood swing, irritability. अब वापस पेट में आ जाओ, gas, bloating, and the female there is a sign of premenstrual syndrome. We will discuss each and everything with the causes. Why PMS? Why gas bloating? We will discuss. We are coming to that point. But these are the main symptom of liver chi stagnation. Very important. Please एक राउंड बना के लिख लो कि लिवर ची स्टैग्नेशन के साइन कितने हैं. नंबर 1, डिस्टेंशन इन द हाइपोकॉन्ड्रियम, tightness in the chest, feeling the lump in the throat, mood swings, irritability, gas bloating, and PMS, premenstrual syndrome. Females are having some like pain or some symptom before the period which is making her unhappy. That are all the PMS. One more thing, sighing, लंबी सांसें लेना, लंबी लंबी गहरी सांसें लेना. इन एक राउंड बना के लिख लीजिए. There is a purpose why I am telling you this. Whenever we will go to the stomach, that time we need to differentiate whether this is the problem of stomach or this is the problem that liver chi has attacked on the stomach. If the liver chi has attacked on the stomach, then we'll see the symptom of liver chi stagnation, these symptoms. When we go to the uterus, we'll see the problem of the uterus. That time also we will see this round box and we'll see if any symptom presents. In the same way, when we go to the throat, when we go in the chest, when we go in the brain, we have to make the differentiation, we have to make the judgment. हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें बोलेगा कि पेट में गैस बन रही है. अब गैस स्टमक के कारण बन रही है कि लिवर ने आक्रमण किया, हमें उस समय जब डिफरेंशिएशन करना होगा तब हमें इन लक्षणों की जरूरत पड़ेगी. तो ये लक्षण सामने घूमते रहना चाहिए आपके. If the person is having present any even a one symptom of the liver chi stagnation, then will have to balance the liver chi.
Okay, let's see the example. One patient is complaining, I am having lots of gas in my, I feel lots of gas, lots of bloating. Please do the treatment. ठीक है? You started the treatment immediately. Oh, this person is having gas, this person is having bloating, let me treat the stomach. Then we'll ask, then we'll see the patient. Patient is sitting in front of you and do like this. We'll ask, do you get stress sometime? Yeah, I'm always stressful. Are you having habit of doing sign? Yes. This is the liver chi stagnation. We will not treat stomach first. We will treat liver chi stagnation first. हम जब तक लिवर ची स्टैग्नेशन को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक पेट अच्छा नहीं होगा. So there are 5 type of the liver chi stagnation mainly. 5 प्रकार के लिवर ची स्टैग्नेशन होते हैं मुख्य रूप से. The first type of the liver chi stagnation, जो पहला प्रकार है, liver chi stuck below the ribs, not able to move. लिवर ची पसलियों के नीचे अटक गई और मूव नहीं कर पा रही है. स्टैग्नेंट. दिस इज द टाइप 1. Pain in the hypochondrium, pain below the ribs, tightness below the rib, cause stress. This is very common with the person who are having clinic stress or the office stress or the stress patient is giving you कि मुझे कब आराम मिलेगा. Or I have seen many family having fight, like fight of saas bahu, fight of two brothers. I have seen many housewives are suffering with this liver chi stagnation. As soon as we touch the liver area, they are telling, I am feeling discomfort. जब हम उनका रिब्स के नीचे वाला एरिया दबाते हैं तो इन्हें डिस्कम्फर्ट मिलेगा, पेन मिलेगा. So this is the first type of the liver chi stagnation. I will write here all the 5 types. So the first type of the liver chi stagnation out of 5, that is liver chi stagnation in hypochondrium. You understood. Pain below the ribs, tightness below the ribs, most common due to office stress or family stress or many other type of stress. Now number 2. Second type of the liver chi stagnation, that is called emotional type. Emotional type, due to the suppressed emotions. Emotion suppress करने के कारण the person who is suffering with the liver chi stagnation having depression, no motivation, sadness और melancholy, दुख. डिप्रेशन होगा, जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं होगा, दुख होगा, मेलेनिकोली होगी, एंड मूड स्विंग्स. So this is the second type of the liver chi stagnation due to suppressed emotions. What is the solution? Share your emotion. That is the solution. Third type. When liver chi get stagnant,
ड्यू टू सम रीजन एंड अटैकिंग ऑन स्टमक। जब लिवर ची स्टैग्नेंट हो जाती है और स्टमक पर आक्रमण करती है। सो दिस इज द स्टमक, ये स्टमक है। स्टमक इज सेंडिंग द फूड डाउनवर्ड। ना लिवर ची अटैक, liver chi stagnation attacking horizontally, then this direction get reversed, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाता है एंड पर्सन इज सफरिंग विद द कंडीशन वॉमिटिंग, belching, nausea एंड हिकअप्स, हिचकियां। उस व्यक्ति को उल्टियां होंगी, डकारें आएंगी, नाशिया होगा, हिकअप होगा, व्यक्ति डकारें लेता रहेगा, डकारें लेता रहेगा। अब आपके सामने एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे डकारें आती हैं। I many patient came to me. How will you find out this belching is only because of stomach? Because it might be only because of stomach. Maybe person eating lots of chili, or chalo let's, or maybe vomiting only because of stomach, or hiccups, हिचकियां only because of stomach, or liver has attacked. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मिर्ची खाई, हिचकियां आती है ना कई बार मिर्ची खाने के बाद। पर्सन ईटिंग द चिली, after eating the chili, many person get hiccups. Am I right or no? Or any spicy things, sometimes we eat and we start getting hiccups. That is only because of stomach. There is no involvement of liver. So how will you find out? So we have to see that box अभी हमने जो बनाया था, whether person having some sign from that box. Read the box. What is written? Irritability, pain in the hypochondrium, tightness in the chest. क्या उसमें से कोई लक्षण है? If yes, then that is this vomiting is because of liver chi stagnation. This belching because of liver chi stagnation. This nausea because of liver chi stagnation, and this hiccup because of liver chi stagnation. ट्रीटमेंट लिवर ची स्टैग्नेशन का ही होगा। लिवर 3 sedate, 13 sedate, liver 14 sedate, gallbladder 34 sedate, pericardium 6 sedate, triple bottom 6 sedate. Temporal headache also liver chi stagnation, the sign of liver chi stagnation, temporal headache. तो चलो ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया। So now whether the person is having pain in the hypochondrium, treatment will be this only, liver 3 13 14, हमारा ट्रीटमेंट ये होगा, liver 3, liver 13, liver 14, gallbladder 34, pericardium 6, triple Burma 6 sedate. Or the person is having lots of stress, office stress or the family stress, treatment will remain same. Or the person is having no motivation in the life, depression, sadness, mood swings with irritability,
some sign of the liver chi stagnation, treatment will be same. Now person is having vomiting, treatment is same. Belching, डकारें, treatment is same. Nausea, hiccups, treatment is same. इनका ट्रीटमेंट वही होगा. I have treated many patients. Some of them were teacher. उनमें से कुछ लोग टीचर थे. I will tell you the story of two teachers. Both are female. Near about age in between 40 to 50 years. Age in between 40 to 50 years. Both patients are female. Both are teacher. When press anywhere, press anywhere, belching starts. Have you seen some patient like this? That is liver chi stagnation attacking on the stomach. अब यहां दबा रहे हो, यहां से डकार कैसे निकल रही है भाई, सोचो जरा. कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट पे थोड़ी दबा रहे हो, कहीं भी दबाओ. Whenever you press anywhere, belching will come out. That is liver chi stagnation. What is the treatment? Liver 3, 13, 14, gallbladder 34, triple warmer 6, pericardium 6, sedate. Bilateral, same treatment. एक पेशेंट तो जब मेरे क्लिनिक में आती थी तो बाकी पेशेंट ने बोला, जब डॉक्टर साहब जब ये आए तो हमें मत बुलाना. When this patient is coming, please, we will come in another time. Because as soon as he enters in the clinic, and even smell is coming out. कोई आपके सामने डकार ले थोड़ा ऐसे करते हैं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता. मैनर्स नहीं है, मुंह पे हाथ नहीं रख सकता, कहते हैं ना लोग. अब बेचारे को एक डकार आए तो मुंह पे हाथ रखे, है ना. So when the person is having multiple belching, na, many people around are getting discomfort. So these two lady, one was divorced and she was having lots of struggle in the family life, and another was having lots of quarrel with the husband and mother-in-law. So she was not able to focus. She was very stressful. मदर-इन-लॉ सुनाती थी कि एक लड़का नहीं दे सकती, लड़की थी उसके पास. She was always stressful. So we have treated these patients and we got success with the help of liver chi stagnation. So I have given you example of vomiting. You might get the patient of hiccups. You might get the patient of nausea. You might get the patient of belching, vomiting. Now, the fourth, when the liver chi stagnation, I treated 1 month. In 1 month, I have treated, first I given 10 session. I given 10 session in 16 days. Then I did a gap of 4 or 5 days. Then again I give 7 or 8 session alternately. In about 35 days I have treated. Okay. So now, when the liver chi got stagnant, now we are talking about the fourth. Liver chi get stagnant and attacking on the intestine. Intestine. जो हमारी ये intestine पर आक्रमण करती है. When the liver chi get stagnant and attacking on the intestine, and this disease is called, this is the intestine. ये हमारी intestine है, ये intestine.
और लिवर जी ने अटैक कर दिया। ओके, तो लिवर जी क्या करेगी? खून खराबा कर देगी वहां पर। लिवर जी विल डू लॉट्स ऑफ डिस्टरबेंसेस and will create one disease that is called IBS, irritable bowel syndrome, very common disease। आंतों का इलाज करते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। Wastage of time, you are just treating the intestine, nothing will happen। Irritable bowel syndrome, name itself irritable, when the irritable words come now, that is liver chi stagnation, intestine is irritated because your liver is irritated। Recently this patient came to me अभी अभी एक पेशेंट आया मेरे पास। ही इज वर्किंग इन द पुलिस, पुलिस में, एंड ही रिश्वत लेके पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए। तो कोर्ट केस चल रहा है, क्वेरी चल रही है, सस्पेंडेड है। दिस पुलिस इज ऑन द सस्पेंशन, सस्पेंडेड है, हैविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। So because of that stressful, liver chi got stagnant and attacked on the small intestine, and this person developed irritable bowel syndrome। हिकअप्स ऑल्सो, हिकअप तो लिवर ची स्टैग्नेशन है ही, जो हमने आपको बताया। हिकअप लिवर ची स्टैग्नेशन है। गॉट इट। उसका भी इलाज, लेकिन हमें इरिटेबिलिटी तो मिलना चाहिए, कुछ हमें लिवर के लक्षण तो मिलना चाहिए, लिवर के साइन तो मिलना चाहिए। नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि ये लिवर ची, ये लिवर इसमें दोषी है। तो जब लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन पर आक्रमण करता है, तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, गुड़ 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 गुड़। इसे कहते हैं बोरिक मस, द साउंड ऑफ गैस। कैसे गैस ऐसे टकरा के आप गुड़ 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 आवाज कर, द साउंड ऑफ गैस इज कमिंग whenever the person is having गुड़ साउंड। उसके पेट पे हाथ रख के टच किया और पेट में से गुड़ 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 कुछ घूम रहा है। सो लिवर हैज अटैक्ड on the intestine, which is creating IBS, irritable bowel syndrome। This person cannot go anywhere। अगर ये व्यक्ति कहीं जाएगा ना, उसे पता चला है कि रास्ते में वॉशरूम लगेगा, तो क्या करेगा? उसी मोमेंट में उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसे इस बात की टेंशन रहेगी कि अगर मुझे वॉशरूम आया तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए दीज पर्सन आर नॉट एबल टू ट्रेवल ड्यू टू दिस स्ट्रेस। सडनली आई गॉट द अर्ज ऑफ पासिंग स्टूल, वेयर आई विल गो, कि मुझे एकदम से। और इन लोगों को जो स्टूल का अर्ज होता है वो मानसिक ही ज्यादा होता है। नो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज डिफरेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो right now I'm talking about the so there is a difference, irritable bowel syndrome and the, or the IBS, and the ulcerative colitis are different। Okay, both are different। लास्ट में आप पूछ लेना तो मैं बताऊंगा। So now we have to do the treatment of same liver 3
sedation, liver 13 sedation, liver 14 sedation, gallbladder 34 sedation, triple warmer 6 sedation, pericardium 6 sedation. अगर आपने स्प्लीन 4 और पेरिकार्डियम का सर्किट भी बना दिया ना तो भी पेशेंट को फायदा मिलेगा. बना दे ना स्प्लीन 4 ऑन द मास्टर साइड, पेरिकार्डियम 6 ऑन द कपल साइड. अगर आपने 2 पॉइंट भी लगा दिए, स्प्लीन 4 टॉन, पेरिकार्डियम 6 sedate, even the patient will get certain level of benefit, because spleen 4 and pericardium 6, this circuit also removing the stagnation. इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोध निवारक. क्या बोलते हैं? अवरोध निवारक सर्किट. When you put the spleen 4 on the master side and pericardium 6 on the couple side, this also will remove the blockage. All type of the stagnation they remove. Are you understanding that what is master side? Yeah, Chongmo. That is Chongmo. Master side जानते हैं ना? Master side means right side for female. So spleen 4 will be on the right side for female, and spleen 4 will be on the left side for male. This is the master side. And pericardium 6 opposite. Okay. Circuit will be in the cross. Suppose I want to put for myself. Spleen 4 will be in the left leg. Spleen 4 here. And pericardium 6 in the right hand. So this is circuit for male. For female, it will be opposite. This is also excellent. This person will get very good benefit, because this circuit is very good for digestion as well as for stagnation. And pericardium 6 also the very good point for stagnation. Okay, this was the 4th number. Now 5th number. Now I'm talking about the 5th number. Let's talk about the 5th stagnation. ट्रीटमेंट सबका एक ही है, एक ही ट्रीटमेंट है सबका, जो मैं बता रहा हूं, पहले मैंने बताया. किसी को फिर भी ट्रीटमेंट नहीं पता हो तो पूछ लेना, मैं फिर से बोल दूंगा. द 5th vein liver chi stagnation attacking on uterus. ये 5वां नंबर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी लिवर ची स्टैग्नेशन यूटरस पर आक्रमण करता है तो क्या होता है? Now it will create PMS, means pre-menstrual syndrome. पीरियड के पहले दर्द होना, पेन बिफोर पीरियड, और डिसमेनोरिया. और irregular cycle, because liver chi is attacking the uterus very commonly. Nowadays, this is very common. Nowadays, most of the female in the teenager time, they have highly stressful for many reasons, many causes. They are very stressful because of study pressure, because of some other social pressure, because of some school culture pressure, because of poor performance pressure. So most of the girls are stressful, and that's why nowadays we can see polycystic ovary is very common. Polycystic ovary अभी common, बहुत common हो गया है. The treatment is same. Liver 3, 13, 14, gallbladder 34, pericardium 6, triple warmer 6 sedate.
Yeah, that is also right. Complex of skin, complex of weight, complex of height, and during the teenage time, girls are very much sensitive. They become stressful. The liver chi get stagnant, and it is attacking on the uterus and creating these all problems. तो ये तो थे हमारे कुछ लक्षण जो हमने बात की लिवर ची स्टैग्नेशन। इसके अलावा और भी कुछ हैं, ये 5 मुख्य हैं, है ना। और भी कुछ है उसे हम अभी समझेंगे, लिवर के कॉन्ट्रावर्शन में समझ लेंगे। Okay, during the discussion of the liver contraction, you will understand. When the liver chi attacking on the chest, it's creating tightness of the chest. When liver chi stagnation attacking on the throat, it is creating feeling of lump in the throat. When liver chi stagnation attacking anywhere, it is creating the problem in that part. But the 5 things are main which I just discussed. Now we are moving because we are talking about the chi stagnation. And we have discussed the 5 types of the liver chi stagnation. Let's talk about the chi stagnation in the small intestine. क्योंकि मैंने बताया कि ची स्टेग्नेशन और जगह भी हो सकता है, और अगर ची स्टेग्नेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाए तो क्या होगा। देखो ये वेरी कॉमन पैटर्न नाउ इट इज, आई विल टेल यू व्हाई। अगर किसी व्यक्ति में बदला लेने की भावना है, द पर्सन इज हैविंग फीलिंग ऑफ रिवेंज फॉर एनी वन, first there will be liver chi stagnation and it will attack on the small intestine and will create a small intestine chi stagnation. स्मॉल इंटेस्टाइन ची स्टेग्नेशन हो या किसी भी प्रकार का ची स्टेग्नेशन हो पहले तो लिवर ची का स्टेग्नेशन ही होगा। रिमेंबर, द पीपल आर हैविंग हैबिट ऑफ टेकिंग रिवेंज, बदला, मैं बदला लेके रहूंगा। इफ दे वांट टू टेक द रिवेंज, बट दे शुड काम डाउन देयर एनर्जी फर्स्ट। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आपको लेना है बदला बाहर, यू वांट टू टेक द रिवेंज विद समवन, बट अंदर तो पहली लड़ाई चालू हो जाएगी। Whatever you want to do outside now, the same thing happen inside. If you're loving everyone, your internal organ will love with each other. Liver will love your heart, liver will love your intestine. If you're having hatred to others, your internal organ will be having hatred in between. जिसको भी rheumatoid arthritis होगी ना या autoimmune disorder होगा, what is autoimmune disorder? The immune system is, they fight within, वही तो होता है autoimmune disorder, कि आपका इम्यून सिस्टम आपके किसी ऑर्गन को मार रहा है, दैट इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इवन लाइक रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं, इनके बाहर आप देखोगे ना तो इनके अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बहुत सारे। सो इफ यू आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स ना, द सेम कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन इनसाइड योर बॉडी। And if you are having love for everyone, then your small intestine will be loving to stomach will be loving your large intestine, and each and every organ will be loving with each other. No problem will happen. So small intestine chi stagnation, very important. So due to the feeling of revenge, बदला लेने की भावना, or maybe some other cause which is causing liver chi stagnation,
और भी कारण हो सकते हैं। And when they attack on the small intestine, they create small intestine stagnation, small intestine chi stagnation. अब लक्षण क्या होंगे जानते हो? कि लक्षण ऐसे होंगे, ऐसे व्यक्ति के पास बैठना कठिन होगा, क्योंकि नीचे से गैस पास करता रहेगा, बदबू वाली वो। when the person passing the gas, जब व्यक्ति बदबू, जब कोई व्यक्ति गैस पास करता है, फ्लैटस, वो या तो बदबूदार होगी या बिना बदबू की होगी। ओके। अगर वो बहुत बदबूदार है तो लिवर ची स्टेग्नेशन होने की संभावना है। if the flatus is having foul smell, very bad smell, it is showing there is chances of the liver ची stagnation। लेकिन वो बदबूदार नहीं है, गैस पास तो कर रहा है लेकिन बदबूदार नहीं है, तो फिर वो लिवर ची स्टेग्नेशन नहीं है ना। केवल उसकी स्मेल से आप पहचान सकते हो। आपको वहां बैठ के स्मेल लेने के लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा बस। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, है ना। बट टीसीए में भाई एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है। ओके। So now, second, the first is this fall smell gas. Fall smell, flatus, बदबूदार गैस पास होगी। Second, very important sign, that is in the male. The male is having pain in the abdomen. That pain is going till the testes. कई बार पेट में दर्द होता है और वो दर्द मेल के टेस्टिकुलर पार्ट तक जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। Pain starts from the lower abdomen and pain might start from the lower back, and it is coming till the male testicular part. That is also small intestine stagnation. वह भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टैग्नेशन है। टेस्टिस में दर्द होना, लहराते हुए दर्द का आना। Got it? I have seen these patients. I have seen these symptoms. So this is also the sign of liver chi stagnation. And what is the treatment? Treatment will be same. अब इसमें ट्रीटमेंट हमारा थोड़ा सा होगा, वी हैव टू एड लिटिल मोर ट्रीटमेंट इन दिस। हमें इसमें एक दो पॉइंट और भी ऐड करना पड़ेंगे। सो डेफिनेटली वी विल ऐड लिवर 3, 13, 14, gallbladder 34, triple Bormer 6, pericardium 6, sedate all. But we have to add some point of small intestine. So we'll add stomach 39, sedate. हम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पॉइंट ऐड कर देंगे, और भी पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, बट दिस इज द वेरी गुड पॉइंट, stomach 39 sedate। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट। रिमेंबर दीज 3 पॉइंट, stomach 36, stomach 37 and stomach 39, and urinary bladder 39। Remember these 4 points. For any problem of the stomach, for any problem of the large intestine, for any problem of the small intestine, and for any problem of the urinary bladder, these points are called lower Hisi point। हमारे शरीर में जब
स्टमक ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम हो, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम हो, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम हो, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट काफी इफेक्टिव होता है उसके लिए. सो फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज ए स्मॉल स्टमक 39, सॉरी, स्टमक 39. और ये पॉइंट काफी रिसर्च करके बनाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा. इन पॉइंट के ऊपर रिसर्च है, खोज है. तो ये प्रोटोकॉल बनाते समय हम ये पॉइंट ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन. ये देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन. गॉट इट? Small intestine meridian starting from the small finger, then crossing the wrist, then crossing the elbow, then coming to the shoulder area, then small intestine meridian going on the face region, ending at the ear. हमारा small intestine meridian कान पर खत्म होता है. So this is the last point of the small intestine meridian. That is called small intestine 90. This is the last point of the small intestine meridian, small intestine 90. So in the small intestine, we are having a small intestine 1, 2, SI 19. There are total 19 in the small intestine meridian. But now, if we see the internal path of the small intestine meridian, अगर हम इसका internal path देखें, let's see this. So internally, this meridian is going and meeting with the small intestine. That's why we are telling it small intestine meridian. अंदर से इसकी ब्रांचेस जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलती हैं. Now one branch is going till the feet, that is stomach 39. वहां तक पहुंचे इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन की पहुंच कहां तक है? स्टमक 39 तक. Single point in the stomach 39 will stimulate entire small intestine meridian. So that's why stomach 39 is the very effective point of small intestine meridian. Now we are talking about the small intestine stagnation. अब आप आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम बोले हैं, सब में लगा सकते हो. कौन सा? स्टमक 39. फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यू कैन पुट स्टमक 39. इसी तरह से बाकी के जो पॉइंट बताए, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है. एनी प्रॉब्लम द स्टमक, स्टमक 36. इन्हें लोअर हीसी पॉइंट कहते हैं. लोअर हीसी पॉइंट बिकॉज दे आर ऑन द लोअर बॉडी and they are having great amount of the energy like the ocean, like a Hisi point, so they are called lower Hisi point. Even the same way the person is suffering. अच्छा, ये जो है ना UB39, ये ट्रिपल वार्मर का है, सॉरी, ये ट्रिपल वार्मर का. ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर दे. अब सही हो गया सर, अब जी सब सही है. ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट. किसी ने बोला था क्या? किसी ने टोका था क्या? किसी ने नहीं टोका. किसी को तो पता होगा UB39 ट्रिपल वार्मर का है. कोई बात नहीं, इट्स ओके. अभी आगे कभी लिखूं तो टोकना, हाँ. देन यू विल बी अवार्डेड फॉर करेक्टिंग. सो दिस वाज द स्टैग्नेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. आप समझ गए व्हाट इज द स्टैग्नेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्टैग्नेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिवेंज. तो हमें किसी से रिवेंज रखना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं? बताइए. नहीं रखना चाहिए. लेकिन कई बार आ जाता है, वी आर हेल्पलेस, किसी ने ऐसा कर ही दिया. देन व्हाट वी शुड डू? we should treat our liver cheese stagnation, so it will not affect our health. तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा. ओके. सो हमने अभी स्टैग्नेशन की बात की. वी टॉक्ड अबाउट द लिवर cheese stagnation. Then we have talked about the small intestine stagnation.
इफ यू अंडरस्टूड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो हम आगे बढ़े अगर आपको समझ में आ गया हो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हम अलग तरह से पढ़ेंगे, है ना। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विल बी स्टडी इन सेपरेटली, या फाइन। अंडरस्टूड एवरीवन? कैन बी प्रोसीड नाउ? क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? अभी इन्हीं के बारे में आपको मैं क्विकली थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ, तो एक और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। So this is the diaphragm, and this area is called hypochondrium. इसे हम कहते हैं hypochondrium, right? So pain in the hypochondrium or the distension of the hypochondrium is the sign of liver chi stagnation. ये liver chi stagnation, which is creating rib pain, which is creating sighing feeling. Okay, these all things. So what is the treatment? Because this area is painful, this area. This is also creating discomfort in the chest region. ये छाती में भी डिस्कम्फर्ट फीलिंग देता है। डॉक्टर के पास जो 6 प्रकार के चेस्ट पेन के पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट ट्रू पेशेंट होता है जो सही चेस्ट पेन का होता है या जो हार्ट की प्रॉब्लम का होता है। बाकी जो पेशेंट होते हैं ना 5, तो नकली पेशेंट होते हैं, वो असली हार्ट वाले पेशेंट होते ही नहीं है। एज सुन एज द पेशेंट इज गोइंग टू द डॉक्टर एंड कंप्लेनिंग, कैन यू ट्रीट माई चेस्ट पेन, आई एम हैविंग सीवियर चेस्ट पेन, they might be because of gas, they might be because of the liver chi stagnation, they might be because of some other reason. So I will tell you, the most of the patient, 18% patient are not the patient true having true chest pain. We have to sedate points bilateral. Yes, right. हमें सारे पॉइंट को सेडेट करना है, bilateral sedate करना है. So when any patient is coming to you asking you, I am having chest pain, I am having pain in the hypochondrium, we have to move the liver chi. This is the treatment. हमें लिवर ची का स्टैग्नेशन दूर कैसे करना है? How to remove the liver chi stagnation? We have to move the liver chi. And liver 3 is the very effective point for moving liver chi. अगर मैं आपको एक एक पॉइंट की बात बताऊं, so let's see this. So number 1, liver 3. Liver 3 is the point who move liver chi, who keeping liver chi in flow. जो लिवर ची को फ्लो में रखता है. एंड गॉलब्लैडर 34 इज द पॉइंट. गॉलब्लैडर 34 जो पॉइंट है, ये हाइपोकॉन्ड्रिया के पेन को कम करता है. दिस पेन विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस पॉइंट. आज एक पेशेंट ने मुझे बोला कि उसे यहां दर्द हो रहा है, यहां पर. मैंने सेम साइड में गॉलब्लैडर 34 लगा दिया और अपोजिट साइड में ट्रिपल वार्मर 6. फ्रॉम द रिस्ट इफ वी गो 4 finger or 3 chun, this is the location of triple warmer 6. So from the wrist crease, for the dorsal wrist crease, we have to go 3 chun.
that is triple Balmer 6. And same side gallbladder 34. 2 पॉइंट लगाने से रिब्स का पेन 5 मिनट में ठीक हो गया. The person is having rib pain, same side gallbladder 34, opposite side triple Balmer 6. अगर नहीं समझ में आए कि कौन सा पॉइंट किधर लगाना है तो बायलैटरल लगा दो. हाइपोकॉन्ड्रियक पेन के लिए इतना भी काफी है, 2 पॉइंट काफी है. फ्रॉम द 6 पॉइंट वी कैन टेक जस्ट 2 पॉइंट, बट ऑल द 6 पॉइंट्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर मेनी पर्पज. फिर लिवर 14 क्या करता है? लिवर 14 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ लिवर. ये कैसे डिसाइड करना है कि वैसे तो सारे पॉइंट बायलैटरली लगाना है, लेकिन अगर हमें डिसाइड करना हो कि हम कौन सा पॉइंट किधर लगाएं, तो रिब्स में से गॉलब्लैडर मेरिडियन निकलता है, तो जिधर की रिब्स का पेन हो रहा है उस साइड गॉलब्लैडर का पॉइंट लगाना होता है, अगर आपको साइड डिसाइड करनी हो. Suppose the person is having gallbladder pain on the left side. So person is having pain in the ribs on the left side. उसको लेफ्ट साइड की पसलियों में दर्द हो रहा है, और the pain in the hypochondrium on the left side. So we will put the gallbladder 34 on the left side. तो हम gallbladder 34 को लेफ्ट में लगाएंगे, सेम साइड में लगाएंगे, और ट्रिपल Balmer 6 इज अपोजिट साइड, और गो बायलैटरल. बायलैटरल चले जाओ तो ठीक हो जाएगा. आपको अगर रिब्स में पेन होता है ना तो ठीक हो जाएगा, इस पॉइंट को लगाइए आप. सो लिवर 3 इज मेकिंग श्योर दैट लिवर chi is moving. If it is blocked, liver chi will open, liver 3 will open it. अगर कहीं भी ऊर्जा ब्लॉक हो जाए तो ये लिवर 3 का काम है उसे ओपन कर देना. लिवर 3 वी कैन कंसिडर लाइक ए ब्लोअर. वो हवा होती है ना, हवा. लिवर 3 इज लाइक ए ब्लोअर, एयर. It will remove the block, so liver chi will be in the flow. Gallbladder 34 will remove the pain from the hypochondria, or relieve the hypochondriac pain or distension. लिवर 14 हमारे लिवर का अलार्म पॉइंट है, पूरे लिवर को बैलेंस करेगा, पूरे लिवर मेरिडियन को बैलेंस करेगा. लिवर 14 will work on entire liver area, will remove the liver congestion because it is the alarm point of the liver. लिवर 14 हमारे लिवर का अलार्म पॉइंट है. तो जब किसी की ची ब्लॉक्ड होती है ना, हम केवल 2 पॉइंट लगा देते कई बार. यू नो दैट when the chi is blocked we just put 2 point. Liver 3 bilateral and Li4 bilateral, this is called 4 gate. केवल 2 पॉइंट लगाने मात्र से भी वैसे हमारी लिवर ची ओपन हो जाती है. लिवर 3 कहां होता है? लिवर 3 यहां होता है. So this is the liver 3. Liver 3. In between first and second metatarsal bone, liver 3. Li4 भी वही होता है, in between first and second metacarpal bone. दोनों एक ही पॉइंट हैं, एक पैर में एक हाथ में. ये हाथ का लिवर 3 है और वो पैर का लिवर 3 है. This is in between first and second metacarpal bone, that liver 3 in the first and second metatarsal bone. When we put 4 gate is removing the blocked chi and making the free flow of chi immediately. 4 gate का एक ही काम है, रिमूव ब्लॉकेज. जैसे पेंसिल में हम ऐसे हवा, किसी पाइपलाइन में ऐसे हवा फूकें, उधर से निकलेगी. So we are blowing the air in some pipeline. In the same way, as soon as you put the Li4, liver 3 bilateral, you sedate all the both points,
Li4 bilateral, liver 3 bilateral, you said it both the point, they will make smooth flow of chi. क्योंकि liver 3 का काम ही है to make the smooth flow of chi. कभी आपको लगे if you are feeling that this person is having liver stagnation, you can use forget on. Forget is also enough. But if you want to give with a permanent relief, then you have to use full protocol. आपको पूरा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा. गॉट इट. तो अगर किसी को पसलियों में दर्द है, इफ द पर्सन इज हैविंग रिप पेन, like someone told that I having rib pain, you can use Li4 bilateral, liver 3 bilateral, gallbladder 34 bilateral, आप यूज कर सकते हैं. liver 14 bilateral. ओके, नहीं पूरा लिवर ची का आप पूरा प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं. अब लिवर 3 क्या होता है? liver 3 and the gallbladder 34, two are the most effective point. Liver 3 and gallbladder 34, two are the most effective point. They give immediate relief on spot. If your point location is correct, on the first sitting, patient will get relief. अगर आपकी पॉइंट की लोकेशन प्रिसाइजली करेक्ट है, सही है, अगर एटलीस्ट आपकी लिवर 3 और गॉलब्लैडर 34 सही है, person will feel immediate relief. Generally क्या करना है, when you put the needle, you just put the needle, don't worry for tonification sedation, it will happen. Or you put the needle in the opposite direction of मेरिडियन का जो रास्ता है उसके थोड़ा सा अपोजिट में needle लगा दो. Got it? So now I will write one protocol here. You can write, this is a very important protocol for anyone who is having pain in the rib. So I will tell you some protocols here. Someone is having pain under rib or pain in hypochondria. This person is having pain under rib, this side, right side. So we use right gallbladder 34 and left triple Werner 6. Sedate, sedate. If you want to make a big protocol, then you can take liver 3 sedate, liver 14 sedate, because liver 14 is the liver area. Gallbladder 34 sedate and Li4 sedate. Very effective protocol. And triple Werner 6 sedate. आप पूरे पॉइंट ले लो, क्योंकि समटाइम इट माइट बी डिफिकल्ट कि कौन सा लेना कौन सा छोड़ना. You can take, but the most important points are gallbladder 34 and the triple Werner 6 for pain in the hypochondrium. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनको लगाने मात्र से आप वर्क कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एड फोरगेट. चलिए इसके साथ हमने फोरगेट भी ऐड कर दिया ना. Li4 bilateral, liver 3 bilateral. Sedate. Now the person is having lots of depression, mood swings. Lots of depression, mood swings. Or irritability. Irritability. So what do? You put the entire formula, liver 3, liver 13, liver 14, gallbladder 34, triple Werner 6 and the pericardium 6. Add Buddha triangle. इसके साथ में
बुद्धा ट्रायंगल ऐड कर दो. वी कैन ऐड द बुद्धा ट्रायंगल anywhere when we want to work on mental and emotional condition. बुद्धा ट्रायंगल मीन्स, मैं बुद्धा ट्रायंगल बता देता हूँ. व्हाट इज बुद्धा ट्रायंगल? बुद्धा ट्रायंगल हमारे मन को शांत करता है. लंग 9, हार्ट 7 and pericardium 6. Sedate. This Buddha triangle is the very good triangle for bringing calmness. तो जब आप मूड स्विंग्स को, डिप्रेशन को, इरिटेबिलिटी को ट्रीट कर रहे हो, इसके साथ अगर आपने बुधा ट्रायंगल भी ऐड कर दिया तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा प्रोटोकॉल का. किसी भी मेंटल इमोशनल कंडीशन में आप बुधा ट्रायंगल का प्रयोग कर सकते हैं. योर प्रोटोकॉल विल बिकम वेरी एक्सीलेंट प्रोटोकॉल फॉर इमोशंस, फॉर कामिंग द माइंड. क्योंकि हार्ट 7 इज द पॉइंट कॉल्ड, हार्ट 7 को हम बोलते हैं द गेट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का दरवाजा. हार्ट 7. पेरिकार्डियम 6 तो है ही. लंग 9 ऑल्सो हैविंग वेरी डीपर कनेक्शन विद अवर कॉर्पोरियल सोल. वी हैव टू सेट इट ऑल. हमें सारे पॉइंट सेट इट करना है. पेरिकार्डियम 6 विल काम डाउन द माइंड. पेरिकार्डियम 6 सबको सेट इट करना. सेट इट ऑल. So there are 3 points: pericardium 6, heart 7. Pericardium 6 will be calming down the mind. This is calming your emotion. Heart 7. Lung 9 working on your soul or corporeal soul. Very effective protocol. इसके माध्यम से हम मन को शांत कर सकते हैं. ठीक है. यानी आपका लिवर ची स्टेग्नेशन का प्रोटोकॉल तो वही रहेगा. हम एक दो पॉइंट ऐड करके उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं. वी कैन वर्क ऑन दैट कंडीशन just by adding 1 point. Okay, now you want to work on the digestive problem or you want to work on the IBS, irritable bowel syndrome. आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पर और इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम पर काम करना चाहते हैं. Now stomach has, now there is a liver chi stagnation. Has attacked on stomach or intestine. When the liver chi stagnation attacked on the stomach, creating nausea, vomiting, belching, hiccups. And when it is attacking on the intestine, it's creating IBS, irritable bowel syndrome. So our protocol will remain same. The first line protocol will remain same. Liver 3, 13, 14, gallbladder 34, ट्रिपल वर्मर 6, पेरिकार्डियम 6, सेडेट. ये तो कॉमन ही रहेगा. सेडेट ऑल बायलैटरल. Now we want to work on stomach because liver is attacking on the stomach. तो अब आप बताइए, मैंने आपको स्टमक का एक पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले. फॉर एनी प्रॉब्लम स्टमक वी कैन ऐड 1 पॉइंट. व्हाट इज दैट पॉइंट? That is stomach 36. So here we will add, because we are treating the stomach, so we'll add stomach 36 and we'll add CB12. CB12 is the alarm point of the stomach and stomach 36 is the lower Hisi point of the stomach. तो ये स्टमक का प्रोटोकॉल बन गया.
So in this way, if the person is having attack on the stomach, then B will add this point and this point, all the point together. हम सारे पॉइंट को लगा देंगे और ये हमारा प्रोटोकॉल बन जाएगा. दिस इज वन ऑफ द ग्रेट प्रोटोकॉल when the liver chi is attacking on stomach. जब लिवर ची स्टमक पर आक्रमण करेगी, will sedate all point, but the stomach point will do even method. स्टमक के पॉइंट को हम even method करेंगे, will not sedate. स्टमक के पॉइंट हमारे इवन मेथड से ट्रीट किए जाएंगे. In the same way, when the liver chi attacking on the intestine and creating IBS. अब IBS पैदा कर दिया है. So protocol will remain same. Liver 3, 13, 14. Gallbladder 34. Triple Gorman 6, pericardium 6, sedate. Plus will at the lower hisi point of the small intestine. We will at the lower hisi point of the large intestine. IBS might affect small intestine and mostly small intestine, but we will add also large intestine. So the lower hisi point of the small intestine is stomach 39 and lower hisi point of the large intestine is stomach 37. ये हम 2 पॉइंट ऐड करेंगे. Got it? We are treating the IBS. We are treating the irritable bowel syndrome. So we are arresting the liver chi from here. हमने liver chi को यहां से arrest कर लिया और यहां से हमने small intestine पर work कर लिया. We are working on the small intestine from here. Got it? So the final protocol will be, we will add stomach 39, stomach 37. If you see the protocol, there are 1 or 2 more points can be added, but this is the most effective protocol. We have to do even method here. Actually, कई जगह आप देखोगे लिखा होगा टॉन, बट टॉन करना थोड़ा सा रिस्की होता है इन कंडीशंस में. Generally in the IBS, we will take stomach 36 also. हम पूरा stomach 36 for stomach, then stomach 37 for large intestine, stomach 39 for small intestine. We take all these points. हम ये सारे पॉइंट ले लेते हैं. जब हम IBS को डील करते हैं ना, इरिटेबल बबल सिंड्रोम को, हम स्टमक का लोअर ईसी पॉइंट स्टमक 36 भी ले लेते हैं. We will take the lower EC point of the large intestine, stomach 37. We'll take the lower EC point of the small intestine, stomach 39. हम सारे ले. अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल ऑफ हाउ द लिवर ची might create many problems and the protocol will remain always same of the liver chi stagnation, but 1 or 2 add-on point always. एक दो add-on लगाते हैं. हम जैसे एक दो एड ऑन लगाएंगे तो हमारा कंप्लीट प्रोटोकॉल बन जाएगा. तो मैं एक ऐसी एड ऑन की आपको टेबल दे दूंगा तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी, है ना. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज मेन प्रोटोकॉल इज सेम. दी अबर लिवर 3, 13, 14, गॉलब्लैडर 34, ट्रिपल बॉन्ड 6, pericardium is same. You just need to know add on point. For this problem, add on this point. This point problem, add on this point. बस वो आपको 1 या 2 पॉइंट ऐड करना है और वो उस बीमारी का प्रोटोकॉल बन जाएगा. इफ लिवर ची हैड अटैक, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द लिवर ची स्टैग्नेशन
and how the liver chi stagnation can attacks at the various parts and can create the problem. और जब कहीं एड ऑन नहीं समझ में आए तो बस उतना लिवर ची स्टेग्नेशन का प्रोटोकॉल लगा दिया, काफी है. ओके, सो थैंक यू सो मच. नाउ विल सी टुमारो. मुझे लगा थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ा सा हैवी हो गई होगी कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है. जो लोग थोड़े से बड़े नहीं हुए, अगर आपको थोड़ी हैवी लगी हो तो बताइएगा कहाँ पर हैवी लगी. किसी को तो लगी है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है, तो किसी को तो लगी होगी तभी मुझे फील हुआ है ऐसा. तो मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं देखूंगा आप किस पॉइंट पर कोई कहाँ अटक रहा है, तो अकॉर्डिंगली आई विल सी दैट. ओके, थैंक यू सो मच. गुड नाइट. अब मिलेंगे कल.